हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ टॉप फुटबॉल। अच्छा, कुछ अलग लग रहा है। जी भाई को मिस कर रहे हो? रुक जाओ, बुला दूंगा, सब्र रखो। आज क्या अलग करने वाले हैं इस एपिसोड में? तो कुछ तुम्हें पता है, काफ़ी सारे कमेंट्स होते हैं, काफ़ी सारी जानकारियाँ होती हैं, काफ़ी सारे नोट्स होते हैं जो आप लोग हमारे साथ शेयर कर रहे होते हैं इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और यूट्यूब कमेंट्स में। उन्हीं सबको कंपाइल करते हुए आज हम जानेंगे जीशान भाई से उनके कुछ अनफिल्टर्ड ओपिनियंस। तो बिना देरी किए लेट्स डीप डाइव इनटू इट। जीशान भाई, वेलकम टू योर चैनल एज वेल। थैंक आइए यू आइए, थैंक यू थैंक यू बैठिए। अरे बैठिए भाई, बैठिए बैठिए। आइए, सू पानी सू सू पानी पीजिए, पानी पीजिए सर। ठीक है तो कॉफ से शायद भाई। आपसे और क्या हाल है आपके? ऑल गुड मैन, ऑल हाउ आर गुड। यू आफ्टर लास्ट नाइट? शाम के 5 बज रहे हैं, 2 बजे सो के उठे हम लोग। ऑल गुड, बढ़िया है। लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस कन्वर्सेशन, बीइंग अ गेस्ट ऑन माय ओन चैनल। या एंड एनी टिप्स फॉर मी? अब तक सही कर रहे हो। ठीक है, अब तक ठीक है। ओके, ओह बिग थम्स अप। मेरा वैलिडेशन आ गया भाई यहाँ से। आफ्टर Igor's team match to Zishan bhai, of course. So on this healthy note itself, Zishan bhai, let's start with the conversation. तो ईशान भाई, आपको तो पता ही है, ज़्यादातर पॉडकास्ट की शुरुआत एक गोट डिबेट से होती है, तो उसी से शुरू करेंगे अपन भी। गोल्ड डिबेट या गोट डिबेट? गोट डिबेट, गोट GOT, मैं गोट डिबेट। तो वील स्टार्ट विद मेसी वर्सेस रोनाल्डो इटसेल्फ, बट हैंग ऑन जी भाई, इट्स अ वेरी पॉजिटिव डिस्कशन। इट्स टॉप फुटबॉल एचडी ब्रो, कम ऑन, वी कीप इट पॉजिटिव। तो जैसा कि हम लोग ने देखा है दिशान भाई, रोनाल्डो ने जो सऊदी प्रो लीग में, आई थिंक फॉर द एंटायर नेशन ऑफ सऊदी अरेबिया, जो एक इमेज क्रिएट किया उनके लिए, और ओवर टू द न्यू ट्रांसफर्स दैट हैव हैपेंड, जैसे हम लोग देखा करीम बेंजेमा को, इनको कांटे को, इवन अभी रॉबर्टो फर्मिनो की खबर आ रही है, और मार्सेलो ब्रोजोविच जो कि बार्सिलोना के लिए एक प्रॉस्पेक्ट हो सकते थे, ही हैज़ मूव्ड टू सऊदी प्रो लीग। तो एक रोनाल्डो ने मेरे ख्याल से एक छाप छोड़ दिया सऊदी प्रो लीग को, इवन सऊदी अरेबिया पूरे कंट्री पे। Can similar fate be replicated by Messi as he joins MLS? I don't know, it could be in a similar way, but Saudi needed this boost. MLS doesn't need that boost. Don't get me wrong, but the thing is कि MLS already एक ऐसी लीग है जहाँ पे काफ़ी टॉप प्लेयर्स खेलते थे, and we have seen several players from MLS go to the Premier League, go to the Serie A, go to all the leagues in top 5 leagues of football. Not all of them, but yeah, there have been a few names जो कि MLS से मूव किए हैं. There hasn't been a name जो कि मैं जानता हूँ जो सऊदी से टॉप 5 लीग्स में आया हो. So when you compare both the leagues, तो MLS is still far better league than Saudi अभी इस पॉइंट टाइम पे. तो क्रिस्टियानो के इस इम्पैक्ट से they have opened up a pathway that people will be like, okay fine, that is now a safe space for us to go and play our football. We have to understand one thing: are these players going over there to compete, to win, or to earn money? Because Koulibaly, after going there, उन्होंने भाई क्या बोला कि अब मैं अपनी पूरी फैमिली को, अपने पूरे विलेज को, hell what, वो अपनी पूरी सिटी को सपोर्ट कर सकते हैं with the money that he'll be earning. Miami won't be offering that same sum of money जो Al Hilal मेसी को ऑफर कर रही थी, but still they are giving him plenty. Actually बहुत ज़्यादा. It could go on कि maybe longer run पे मेसी could earn more than what he could have potentially earned at Al Hilal, Saudi में. कंपेयरिंग द फेट या कंपेयरिंग कि दोनों मेसी क्या वही सिमिलर इम्पैक्ट कर पाएंगे क्रिस्टियानो रोनाल्डो जैसा, आई डोंट नो वो हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा. बट अभी मेसी के आने के बाद वी हैव सीन MLS के प्राइसेस जो उनके स्टेडियम के थे वो हाइक हुए हैं. मेसी को कट मिलने वाले हैं सारे शर्ट ये सेल से. फुटबॉलिंग वाइज क्या इम्पैक्ट होगा? वी हैव सीन नॉट जस्ट मेसी, बुस्केट्स गोइंग देयर, सर्जियो रेमोस गेटिंग लिंक्ड, Alba getting linked as well. And that's that. Together. Yeah, and that band is getting back together. And that's that. इसके अलावा कोई और नाम नहीं आया जो कि MLS जाने वाले हैं. The thing is कि आप सऊदी का जो improvement देख रहे हो, it's not just driven by one particular team. I made a very detailed video जहाँ पे मैंने सऊदी कंसोर्टियम के बारे में बात किया था, जो उनका PIF है, जो उनका इन्वेस्टमेंट फंड बैक्ड जो टीम्स हैं, 4 टीम्स हैं जो कि उनके अंडर हैं. But the thing is कि those 4 clubs would also help the bottom clubs टू साइन द प्लेयर्स. तो आप इत्तेफाक से देख के, आप इतिहाद देख लो, आप नासर देख लो, आप और सारी टीम देखो, सब में प्लेयर्स आए हैं. ठीक है, तो सऊदी में येस टॉप टीम्स हैव मेड द बिगर साइनिंग्स, बेंजेमा एंड ऑल गए हैं, बट आप बॉटम टीम्स को भी देखोगे, एवरेज टीम्स को भी देखोगे, दे हैव मेड द साइनिंग्स एंड दिस इज व्हाट सऊदी वांट्स टू डू. बहुत डिटेल में एक वीडियो में ऑलरेडी मैं कवर कर रखा हूँ, आप लोगों ने देखा होगा. सो इन MLS, I don't know if that would happen or not, but yes, talent is better in MLS, जो कि हमने अभी तक देखा है. The level of football is a bit better, yes.
मैक्सिकन्स काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे खेलते हैं, यूएस के प्लेयर्स काफ़ी हैं वहाँ पे जो खेलते हैं, सो एक क्वालिटी वहाँ पे ऑलरेडी है, बट कंपटीशन नहीं है। कंपटीशन जैसे कि बेल ने भी कहा कि भाई जो अगर प्लेयर्स हारते हैं तो फिर दे आर लाइक ओके चले यार हार गए ठीक है घर जाओ, किक इन अ बियर एंड बी हैप्पी अबाउट दैट, तो दैट्स व्हाट दे डू। विल मेसी क्रिएट एन इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट, चेंज द फेट ऑफ MLS, मेक इट अ टॉप 5 लीग? That's what we have to find out. So we'll have to be patient about it and hope so. But Messi and Cristiano, these are two big names who move people, who move countries' economics. So इसी के ऊपर दिशान में मेरा अगला सवाल यही था आपसे कि चूंकि वी आर ऑब्जर्विंग कि अब कंट्रीज़ लाइक सऊदी अरेबिया एंड इवन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो अपने आप को डेवलप करना चाह रही हैं इन द फील्ड ऑफ फुटबॉल, तो क्या अब अच्छी बात यह है उन लीग्स के लिए कि वो अपने यंगस्टर्स को एक लंबे टाइम तक रिटेन कर पाएंगे बिकॉज ऑफ दी स्टार्स प्लेइंग विद देम अलॉन्ग साइड देम लर्निंग फ्रॉम देम? क्या एक उनकी स्ट्रैटेजी हो सकती है कि कीपिंग द टैलेंट क्लोज टू देमसेल्व्स? क्योंकि मेरा सवाल कहाँ से आ रहा है, सऊदी का हम लोग ने देखा था जो सबसे पहला मैच उन्होंने वर्ल्ड कप की प्रिपरेशन किस लिए की थी, अपने लीग को उन्होंने रोक दिया था। तो समवेयर इन देयर हेड दे आर वांटिंग टू डेवलप वर्ल्ड क्लास टैलेंट्स और जो उनके नेशन को केटर कर सके। आई कुड थिंक सिमिलर सिचुएशन कुड बी विद द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिकन टीम एज वेल। यूनाइटेड स्टेट्स डेफिनेटली वेरी वेरी ट्रू। द थिंग इज कि सऊदी ये एक पूरा एक्ट प्लान कर रही है, उनके एक्ट में जो इट्स नॉट अबाउट साइनिंग टॉप प्लेयर्स, दे वांट टू इन्वेस्ट 2 बिलियन यूरोज इन द अपकमिंग 3-4 years, and that would be for players, that would be for the development of their youngsters, plus they want to invest other 10 billion euros for the whole development of the Saudi Pro League. अब that includes the stadium, the coaches. अभी जिरार्ड को आप देखे हो, जिरार्ड a top manager, well, एक अच्छा legend of a player starting off with his managerial career stint, and he is going to Saudi, so by that tells you a lot. So yes, definitely I would say कि भाई वहाँ पे जो younger talents हैं they might say कि भाई हाँ मेरी टीम में क्रिस्टियानो है यार, मैं तो यहीं रुक के खेलता हूँ ना, मेरे potential अच्छा है for me to get famous, for me to get people talking about me, and maybe in the future I would make a move. But don't get me wrong, Shami bhai, everyone still would want to play in the top 5 leagues of Europe, specifically the Premier League. This would change nothing in terms of competition. एक लीग की अगर वैल्यू ओवर द स्पैन ऑफ इयर्स बनी है तो वो इट इज़ ओनली बिकॉज वो लीग इस हिसाब से ग्राइंड करी है रिजल्ट्स को। जैसे कोई क्वेश्चन निशान भाई, अभी जैसे स्टीवन जेरार्ड अभी इत्तेफाक पे गए, तो आपको क्या लगता है असल में उनके लिए पोटेंशियल क्या डेस्टिनेशन हो सकता था? आई डोंट नो, hasn't done a good job Steven Gerrard obviously, और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, लाइक गुड मैनेजर वरेड गुड प्लेयर्स एंड वाइस वर्सा, तो ऐसा बहुत कॉमन है, देखा हमने कि भाई ऐसा जरूरी नहीं कि अच्छे मैनेजर है तो अच्छे प्लेयर रहे हैं तो अच्छे मैनेजर बनेंगे, तो इट डजंट वर्क लाइक दैट। Steven Gerrard, yes, obviously he tried his trade in the Premier League, but I think he should have stayed in the Premier League, man. मुझे लगता है वो बंदा should have managed a team for championship, maybe Bundesliga में, like you can see Xabi Alonso doing there, Bayern पे he's doing good work, and अभी potentially Real Madrid is looking at him. Yeah. Carlo Ancelotti 24 में ब्राज़ील जाएंगे, तो he could be one of the prospects to Real Madrid. But Gerrard की यहाँ तक बात है, I don't know. I think he's going there to earn some money. Meanwhile, plus manage a decent enough team with decent enough good enough players, and maybe अपनी reputation को थोड़ा सा वो बेहतर कर सकते हैं, and then he would come back. Eventually they'll come back, Baba. They'll come back. These guys are going over there for a post. It's a vacation. It's kind of a vacation for them. Players, they are going there to earn money. Don't get me wrong. Karim Benzema is going there. He's earning 100 million euros. Cristiano is already earning 200 million euros. Koulibaly ने literally ये बात बोली है. They are going in a comfort zone. Koulibaly said, भाई कि मुस्लिम country है तो मुझे भी वहाँ पे काफी अच्छा treatment होगा. Stuff like that. Because he's from the same religion. So it is a comfort zone for the players, and it's not that good of a competition over there. It's like a healthy environment for them to still play football, earn good money, and also keep their family supported and stuff. So yes, that's the truth. But ultimately, everyone would want to come and play in the top 5 leagues of Europe. That's the statement, guys. Everybody will return to play in the top 5 leagues. So Zishan bhai, moving from one Saudi consortium to another Saudi consortium, in the form of Newcastle, अभी हम लोग ने देखा लेटेस्ट सांद्रो टोनाली फ्रॉम AC मिलान टू न्यूकासल, डन डील होता है 70 मिलियन की फीस पे। बंदा जाना नहीं चाहता जिशान भाई, स्पेकुलेशन थी, रो रहा था जब उसको पता चला था कि ही वुड बी ट्रांसफर्ड, बट इवन दो ही इज़ ट्रांसफर्ड, एक न्यूकासल यूनाइटेड टीम में आता है, एक बंदा जहाँ पे अभी मेरे ख्याल से ही वॉज फाइंडिंग हिज स्पेस देयर, अपने आप को ही वॉज इन्जॉइंग देयर,
और was a leader there. he was leader there. And इस बीच ईशान भाई, even Paolo Maldini over the past weeks he gets the sack. Yeah. क्या ये जो ट्रांसफर हुआ है, is that one of the reason or the after effects of that sack? Definitely. Shamik bhai, yeah. Maldini ka sacking was a surprise, and but to say, like we heard rumors about a rift between the management and Maldini, the technical board of directors and stuff. Yes. तो यहाँ पे उनको sack किया गया. Same thing happened with Ban as well. Hassan और Oliver Kahn इनको भी sack किया गया था because board और presidents में agreements नहीं थे. जहाँ तक बात है AC Milan की, I think the board wanted them to move in a different kind of a direction, but Maldini wanted them to go in a certain other way. और यहीं पे हमने देखा differences आए. कमाडा की signing में delay हो रहा था, अभी भी उसकी signing perfect नहीं हो, but mutual terms agreed थे, stuff like that. Medical schedule करना था, इनको वो कर नहीं पाए. Although they have made the signings, yes, Tonali was a big surprise for me. I did not expect him to leave AC Milan. बिल्कुल भी मैं expect नहीं किया था. So on the other hand, for Newcastle, it's like a mammoth deal, भाई. ये stamp है in the Premier League. Can you imagine a player like Sandro Tonali? He goes nowhere else. Could have gone to Manchester United. Could have been a great player. Could have gone to Liverpool. Then kind of need a DM. Could have gone to Chelsea. Could have gone to any team. He went to Newcastle United, and Newcastle, I think यहाँ पे Eddie Howe को हमें बहुत बड़ा thanks बोलना होगा, because when he came in, तो a lot of people were like कि भाई अब next जो sack होगा वो Eddie Howe का sack आएगा, और they will get a better manager. But Eddie Howe showed everyone कि what can he do, and he made them qualify for the Champions League, जिसकी वजह से अब the whole ownership is backing him, and they get him a statement signing, and they are not done there. उन्होंने start बड़े अच्छे से किया था, signing a few important players. Botman लाया उन्होंने. Isaac की signing was a statement signing. Gimares was the best signing that they did अभी तक. And now in comes in Sandro Tonali. So imagine a midfield of Sandro Tonali, Bruno Gimares and Willock, and then Joelinton over there. It would be damn hard to score a goal against them. पीछे Burn है, Botman है, Shar है, goalkeeper, man, oh man. So good luck Premier League teams scoring goals against Newcastle United. But yeah, they have done a great business start for AC Milan though, but Milan will always survive. They have made some signings by उन्होंने Ruben Loftus-Cheek को sign किया, good player, तो decent enough. Yes. But काफ़ी प्लेयर्स लूज भी कर गए वो लोग. ब्राहीम दियाज एक अच्छा प्रॉस्पेक्ट था उनके लिए, काफ़ी लूज कर गए. बट अगेन मेरे ख्याल से जो एक जिशान मैंने थोड़ा सा हिंट दिया था उस चीज़ को लेकर कि कहाँ पे जो डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन आ रहे थे उनके टेक्निकल डायरेक्टर और साथ साथ स्पोर्टिंग डायरेक्टर भी उन्होंने सैक कर दिया, साथ ही पाउलो और माल्दीनी के. आप लोग कमेंट ज़रूर करें जो उनका नाम है. और उसमें डिफरेंस जिशान में बेसिकली यह था कि अब पाउलो माल्दीनी वॉज requesting signings. Yeah. You wanted some big money moves there. Not even at least 50 million moves there. You are signing players from like in the form of Charles Di Ketelere, or even you are getting people on free and you are getting your academy players up, but you have to compete in the Champions League. Especially what you did last season. Keeping in mind what you did last season, Yeah. So with these sets of players, with the youngsters and थोड़े से old players, आप वहाँ पे जाके they lost against Inter Milan. Yes. So they did good in the Champions League. Imagine what could they do with some better players. And सबसे बड़ी उनके लिए win है ना, उन्होंने अभी तक they've kept hold of Rafael Leao. That's the biggest win for now. And Mike Maignan as well. तो इसके आगे would they sell? Would they make some big money moves? I don't know. Milan. अभी तो प्रोग्रेस नहीं उनका. League and the club has been in huge turmoil. You know what happened with Juventus, points allegation and stuff, points slash करना out of Europe altogether. So yeah, definitely the league थोड़ी सी is underrated at this point of time. Is not at the best levels. हमने देखा, but although 3 teams from Italy were there in 3 respective finals, European finals, but none of them could win, and that tells you a lot of things. एंड वेरी गुड पॉइंट है जिशान भाई, क्योंकि मैं अगला सवाल इसी से रिगार्डिंग था. जैसे कि आपने बोला अभी जुवेंटस को भी देख रहे हैं, टर्मोइल से गुजर रही है, उनके ऊपर जो भी एलिगेशंस लगे हैं अभी आउट ऑफ द चैंपियंस लीग नेक्स्ट सीजन. एक मेरे ख्याल से एक स्क्वाड रीबिल्ड भी उनको चाहिए होगा, गोइंग टू द फैक्ट कि बहुत सारे लिंक्स आते हैं उनके हर एक प्लेयर के ऊपर, हर एक प्लेयर के ऊपर लिंक आता है उनका. एंड नॉट इन अ गुड वे. आई एम नॉट सेइंग कि बहुत कोई अच्छे क्लब डूशान व्लाहोविच या 2-4 प्लेयर को आप छोड़ दीजिए, कोई बहुत अच्छा लिंक नहीं आता. तो और जो लिंक्स आता भी है शामिक भाई, वो आता है प्लेयर के लीविंग का, सेल का. Federico Chiesa being long also linked to Newcastle United, and काफी सारे उनके जो टॉप प्लेयर्स है Paredes already जा चुके हैं, Di Maria जा चुके हैं, they have signed Timothy Weah, they are looking to sign Fratesi as well. Bremer है already वहाँ पे, but they need to strengthen their team. Cuadrado has left the team as well, so they need to improve the team. And Max Allegri, I don't know what he's doing. Start of the season we talked about this कि भाई how far he can take the team. Hasn't done enough. They play shit football. So what are your expectations from Juventus next season? Well, bare minimum league जीतनी है. Juventus is a winning team भाई, but I don't think so. This point of time पे they can go on to compete with Napoli
Inter even after signing Marcus Thuram and all, they are making some moves यार. Inter ज़्यादा मुझे competitive लगती है on the pitch and off the pitch as well. And now it's not all about Juventus. It's about the Milan teams यार. So I guess both of the teams and even include Napoli this time, they have done great job. Juventus will have a lot of problem to compete, but then it depends on the top brass. Right, right. Do you see Dusan Vlahovic leave this summer? Not this summer, nahi. Okay, okay. And just one quick question on that, on the Napoli front. Do you see Victor Osimhen leave this summer? Unless a big offer comes their way, 120 million, nothing less than that. Nice. So, talking about these big transfers, a team which has been involved in the big transfers over the past transfer windows, बहुत ज़्यादा criticism face किया उस टीम ने. उस टीम का नाम है चेल्सी. जिशान भाई, ओवर द पास्ट ट्रांसफर विंडोज हमने देखा, ओवर द पास्ट ट्रांसफर विंडोज क्या, ट्रांसफर विंडो की बात कर, विंडो कि बहुत ज़्यादा मिखाइलो मोद्रिक वाज अ बिग नेम, बिग मनी साइनिंग देयर, काफ़ी सारे प्लेयर्स इन आए, काफ़ी सारे प्लेयर्स इन ही आते रहे, बट दिस टाइम अराउंड वी आर ऑब्जर्विंग इन दिस ट्रांसफर विंडो कि एक स्मार्ट बिजनेस मूव नजर आते हुए. It's not smart business move, Sean, right? It's freaking football. Okay. You can't go on and dismantle a team like that made you win the Champions League 2 years back. How many players are left in that squad right now? I don't know. पता नहीं. Kepa, 2, 4. I don't know. Kepa Arrizabalaga, 1. Thiago Silva, the other one. And a few others, yes, definitely. But come on, that's not how to run a football club. But अभी तक मैंने नहीं देखा है. जब से मैं football देख रहा हूँ, I haven't seen something like this happen in world of football, यार. और I think maybe Todd Bowley is, or I guess maybe he's messing it up, or else he's doing something revolutionary and might make them a top team in the future, because well, the approach is not bad. So बस बात यही आती है ना कि मतलब Chelsea का approach is the youngster driven approach, but यार people should not forget how much the veterans are important. मतलब Thiago Silva is the only one over there with some substantial experience. Aspilicueta has left. इसके अलावा Kante has, but like come on man, Kante, Jorginho, Mason Mount, Kai Havertz, खत्म Pulisic, Ziyech, सब गए, खत्म जा रही है टीम. And that is unbelievable यार, unbelievable. So I think that was Unfiltered right there guys. अगर अभी तक वीडियो पसंद आ रही है जरूर लाइक जरूर करना. ये Unfiltered था बाबा. तो जिशान भाई, अगर if you are Moises Caicedo, let's say for example, and you have a prospect like Chelsea in front of you, yeah, are you gonna take it? Well, ठीक है, I'm not playing Champions League football with Brighton, although I'm playing Europa League with Brighton, but I'm playing nothing with Chelsea. Why would I go there? I'm waiting for a move of Manchester United. I'll be waiting for a move of Manchester. मैं क्यों Chelsea जाऊँगा? Why? To join that shit show जहाँ पे मुझे training ground में बैठ. 1 year. नहीं, 1 year कैसे contract? I'm Caicedo, I'm a young player. 1 year contract. I'm saying कि 1 साल आप नहीं खेलोगे, probably 1 साल. Yeah, but what's the guarantee? Who's to say कि भाई I'll be a success over here? Well, I will be a success over here, but I'll be competing in the top tournaments regularly. There's no guarantee about Chelsea, Sean. It's a project that has no end. It's a rebuild, yeah. You could go on and hit a wall with it, or you could go on and see the light at the end of the tunnel. That light could be the opening, the air, the rail tracks, or it could be another train coming in front of you. So we don't know what's going to happen, where Chelsea headed. I'm going to go to certainty. Manchester United under Eric Ten Hag will do better than Chelsea under Pochettino. That's again a statement there, Zishan bhai. Thank you for the content, bro. Thank you. Talking about Manchester United, a lot of links there, Zishan. Yeah. I think links. Manchester United, my fans might be hating with this term. अरे आपने देखा होगा वो मीम चल रहा है, you know, Manchester United के लिए एक 11 बना रखा है उन्होंने, उसमें लिख रखा है rumored 11 बना दिया. Rumored है, scouted, linked with. तो पूरी 11 को वहाँ पे उन्होंने अलग-अलग terms use करके वहाँ पे दिखा दिया. Well, that's a big joke on them. They have delayed a lot of things, but पता नहीं, they are working slow, very slow. But let's say, for example, just hear me out, Jahan here. So you hear Alexis McAllister, you hear Harry Kane, you hear Declan Moises Rice. Caicedo, you hear Declan Rice, you hear Kim Min-jae, you hear Harry Kane, you hear David Costa there, the goalkeeper. Diego Costa, yeah. What? And now, first time this, I think today it was just Manchester United revealed Mason Mount, but as the number 7. भाई यार खतरनाक है, like number 7. Does that hurt anyone in the squad right now? It would hurt people in the squad. I mean, ठीक है, कौन सा ऐसा player है जो कि deserving of the number 7 jersey in the team? Let's not get hyped up on Garnacho. Giving him a number 7 jersey would be a big mistake, as it was for Ansu Fati. Oh, giving Number the 10 role. yeah. Well, ठीक है, हमारे पास option नहीं था. Barcelona
put trust on that guy, and by unlucky that he got injured, and then ab jo hua wo hua. Otherwise he could have done justice with that jersey. Yes. Garnacho ke liye, again, he's a good prospect. Will he be a regular starter next year? He should be by now, but number 7 on that youngster. बाबा बंदे ने ऑलरेडी अपने ट्विटर के हैंडल पे और इंस्टाग्राम के हैंडल पे Garnacho 7 ऐड कर लिया. That we all thought expectations है कि that he would be getting the number 7 jersey, which wouldn't have been wrong. United have given the number 7 to lesser proven players before, Valencia and all for one. But Mason Mount getting the number 7 jersey, and he shows the willingness to take that jersey. बंदे ने जो चीज़ें बोली हैं अपने साइनिंग में, अपने इंटरव्यू में, कि यार इतने महीनों से जो चल रहा था उसके वो जानने के बाद भी you would be surprised that I left Chelsea. So, but आपको पता है भाई what Mason Mount said, what he meant. तो आप एक side of the conversation सुन रहे हो Chelsea का ये वो. Let's wait and hear what Mason Mount has to say about it. He wasn't traded fairly over there, being from Cobham. Their own youngster, 100k per week पे होना, improvement नहीं होना salary में. यहाँ पे he'll be earning somewhat over 200s. So भाई अच्छा इंक्रीमेंट है उसके लिए. Number 7 makes a very big cash. Like हम जानते हैं कि 7, 10, 11 ये सारे 9 numbers they are given to forwards. They're given to the forwards, goal scorers, attackers. But giving a 7 jersey to Mason Mount, you would not go on to expect Mason Mount scoring those goals that Cristiano Ronaldo did. But 7, I think this guy is gonna do justice to the 7 jersey. What has been done, better than what has been done in the past 10 years, especially since Cristiano Ronaldo left. No player has done justice to that number 7 jersey. Mason Mount would do at least better than all of them. Statement there. He's a good player. सो अकॉर्डिंग टू यू, अभी तक जितनी भी साइनिंग हुई है, हम लोग ने लिवरपूल को देखा 2 साइनिंग करते हुए प्रीमियर लीग में, और हम लोग ने देखा सऊदी अरेबिया का प्लेथोरा ऑफ साइनिंग्स करते हुए. बट आई वोंट इन्वॉल्व दैट टू दिस कॉन्वर्सेशन. बट अभी तक जितनी भी साइनिंग्स हुई हैं जिशान भाई, आपको अभी तक में वन ऑफ द की साइनिंग्स क्या लगा आपको, प्लेयर और क्लब दोनों के साथ? आई एम नॉट सेइंग कि बस कोई प्लेयर चला गया वहाँ पे, ज़रूरत नहीं उसमें, समझ गया. यूटिलाइजेशन एंड द प्लेयर्स एबिलिटी, उसका जो बीच का है इंटरसेक्शन. मैं पहले नाम लेके बोल दूँ यहाँ पे, because that is one of the best signings and that was very much needed and we all expected that to happen, but हमें पता नहीं था. That was Gundogan to Barcelona, because player definitely नहीं. I'm not gonna talk about Liverpool. आ रहा हूँ मैं वहाँ पे, but I'm just getting this whole conversation out of the way. Gundogan to Barca is a great move. Barca needed him. The team filled with youngsters. They needed some experience over there, and Gundogan to Barca makes big sense over there. बंदा leader है, अच्छा काम करेगा वहाँ पे. Moving along, Liverpool definitely खतरनाक साइनिंग की है. अभी तक प्रीमियर लीग में I haven't seen a team doing better business than them. Probably could be Arsenal, Julian Timbers, Declan Rice, Kai Havertz, भाई साहब बुन फाड़ दी. अब क्या चाहिए भाई उनको? Like come on, incredible. अभी भी मेरे ख्याल से गोल चाहिए. रोमियो लाविया को वो देख रहे हैं साइन करने के लिए. Again, so if they go on to do it, if Partey leaves, तो भाई another business, भाई खतरनाक किया उन्होंने. Well, Chelsea ने business बहुत किया है, but I'm not gonna put them in the conversation because we all know कि भाई क्या है चेल्सी का हाल अभी इस पॉइंट टाइम पे. They haven't done bad business. They have signed players. They are signing youngsters. हर दिन हम देखते हैं चेल्सी एक यंगस्टर साइन कर रही होती है, ब्राजील से, यहाँ से, वहाँ से, अंडर 18, अंडर 17 है कुछ वो बंदे. गुड प्लेयर्स एज वेल. आंद्रे सांतोस वन एक्साइटिंग प्रोस्पेक्ट. बट लिवरपूल अगेन, मैकलिस्टर को 42 मिलियन यूरोज में साइन करना, डोमिनिक सोबोस्लाई को उसके रिलीज क्लॉज 70 मिलियन यूरोज पे साइन करना. इन द प्राइस ऑफ जूड बेलिंगम यू गॉट 2 वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स एंड 2 क्वालिटी टेक्निकल प्लेयर्स जो कि लिवरपूल को they can make them equally competitive to Manchester City, because they are not right now. They haven't been last year. We saw how much they struggled. So यहाँ पे लिवरपूल का ट्रांसफर रुकना नहीं चाहिए. If they go on in the season with this, they will struggle. Why? They need a defender. उनको चाहिए, डेप्थ के लिए चाहिए. Not that Konate and Van Dijk can't do, but if they were robots, then we would have said कि भाई yes, but they are not. They are humans. They are bound to have those injuries. Matches miss करेंगे. And बाबा अकेले इन पे base करना पूरा season, it won't be wise. Jorge Schmidt and Jurgen Klopp, if you are listening to this guy, please यार सुन लो भाई. लोग सुनते, अब तो दुनिया सुनती है यार, आप भी सुन लो. जिशान भाई, मूविंग फॉरवर्ड स्विफ्टली, हम लोग ने देखा एक बंदे का नाम कॉन्स्टेंटली हर ट्रांसफर विंडो में निकल के आता है, एंड यू माइट हैव गेस्ड दैट. आई थिंक आपका इमोशन काफ़ी अच्छे से मुझे बता दिया वो चीज़. किलियन एम्बापे टू रियल मैड्रिड हैज़ बीन अ स्टोरी ऑफ द पास्ट ट्रांसफर विंडोज. मेरा सवाल कुछ और है. आई एम सेइंग, विल किलियन एम्बापे ever, I'm not saying next transfer window, this transfer window, ever join Real Madrid? Oh, अच्छा. Ever, yes. Can't happen that Kylian Mbappe goes on and finishes his career without stepping foot in the Bernabeu. Can't happen. He's gonna be there. If not this year, next year पक्का है free में वो बंदा आएगा.
Carlo Ancelotti leaves, Kylian Mbappe comes in, a new manager comes in, got a new team, Modric leaves, Kroos leaves, new brand of team, new brand of football, new brand of manager, a special talisman signing in Kylian Mbappe. How are they gonna fit him play? कैसे वो खिलाने वाले? अभी इसी का एक तभी तो एक reason है. Why do you think I'm saying this with confidence? They could have gone on and signed a world-class striker, but they went on to sign only Joselu because अगले साल Kylian Mbappe will come in and वो बंदा वो strike पे खेलेगा. He's gonna play there as a striker with Kylian Mbappe, with Vinicius. Sorry, although वो उसको preference नहीं है वहाँ पे खेलने की as a striker. कई बार mention कर चुका है बंदा कि मतलब wings पे उसको खेलना ज़्यादा पसंद है with a number 9. But at Madrid, I think he's gonna do that. वो उनके कच्चे धो देगा, even if they would ask him to do that, but which they shouldn't, and he shouldn't also do that. But sense the tone. Yeah. I think Kylian Mbappe is gonna be there in the future. I think this should put a smile on the Madrista's face right there. Madrid इस point of time पे they don't care actually, पता है? They are done with it. वो कहते हैं आए ना आए हरामखोर. Exactly my point. फिर you are getting भाई Jude Bellingham यार. बस they're happy with that. They're happy with that. I think you should be happy with that and enjoy that lad यार. He's just a baller. I'm saying भाई दिल में पत्थर रख के भाई. मतलब ऐसा हुआ ना लिवरपूल फैंस बोला एक भाई जूड बेलिंगम नहीं आए छाती पे लेके घूम रहे हैं छाती पे लेके घूम रहे थे पीठ पे छपवा के घूम रहे थे वेलकम टू लिवरपूल के कंपाइलेशंस बन गए थे जूड बेलिंगम के बारे में सपने देखे गए थे एंड देन इन कम्स इन मैकलिस्टर एंड सबोस्लाई. यहाँ पे खुशी नहीं है उस बंदे को एंजॉय करना. क्यों नहीं करेंगे? आपका बंदा थोड़े है वो. करना भाई डेफिनेटली करना है. बंदा एंजॉय करना बस हमारे खिलाफ एंजॉय मत करना. ये दिस वाज अ एस्ट्रिक छोटा सा. यस ओके बट जिशान भाई ओइंग टू द फैक्ट कि अभी लालिगा में वी हैव सीन कि थोड़ा सा अभी और भी नई टीम्स निकल के आ रही हैं अभी आपके नज़र में क्योंकि देयर हैज़ ऑलवेज बीन एक थीम रहा है जो हमने आपसे हमेशा पूछा हम लोग की ऑफ कैमरा कॉन्वर्सेशंस में भी कि डू यू सी अ यंग प्रॉस्पेक्ट फ्रॉम लालिगा अगेन बॉलिंग दिस सीजन. हम लोग ने गावी के बारे में हम लोग से सुना था आपसे बट वे बिफोर यू स्टार्ट प्लेइंग इन दी बार्सिलोना लाइनअप we have heard from you even Pedri as well. अभी do you think I think आप मेरे से कुछ दिन पहले सेंटर बैक के बारे में और आई थिंक सेल्टा विगो के जो मिडफील्डर हैं गैब्रियल वेगा जिनकी बहुत ज़्यादा तारीफ और रिक्वायरमेंट्स भी चल रही थी. अभी क्या लगता है आपको कौन है अभी जो एक यंगस्टर जो आई थिंक could take the world by storm? Takefusa Kubo is a guy जो कि I'm always look up to. He's one of those underrated players outside the top 3 of the team. Atletico Madrid के कुछ players हैं who are doing Barrios, the creative midfielder of Atletico Madrid, बढ़िया player है. He does a very good job. Alex Baina, I think the guy who apparently got punched by Fede Valverde, but the kid that aside, baller. Nicholas Jackson was there at Villarreal, but now he jumped ship. Chelsea जा रहे हैं वहाँ पे. तो it was another one. But इस बार interesting point है कि defenders are moving in La Liga. Like but that I mean कि मतलब अच्छा खेल रहे हैं. Fran Garcia आप देखो, Raul Martinez देखो. Balde again, man, talent तो definitely है. The thing is कि ये जो players हैं La Liga के इनकी इतनी बातचीत नहीं हो पाती है जो players आप प्रीमियर लीग में जितना सुनते हो. इंग्लिश मीडिया तो भाई डेफिनेटली भी नो थोड़ा सा ज़्यादा गुनगुन गाते हैं. About La Liga, well, they don't get talked about enough, but all of these players and Thierry Correa जो full back again यहाँ पे हैं, we've seen good quality players in La Liga and very talented players. Gabri Veiga is another level. वो बंदा he could be a starter in top teams in world football easily. वो बंदा इतना quality बंदा है. Again, he's gonna move. अब वो कहाँ? But we don't know. We have to see. But yeah, La Liga का talent should be identified. Definitely, I think our viewers identified one particular talent in India and a very commonality between India and Barcelona, Zishan bhai. So abhi there is this comments and this ideology going around that we have an Indian Gundogan at Talk Football HD. Do you know who that is? So I just want to take a moment to ask you, do you know who that is, Indian Gundogan? I don't know, पता नहीं. So it's you, Zishan bhai. Very good acting there. अरे यार मैं I was really hoping पढ़ा के देखो मुझे इंडियन गुंडोगान के. I was hoping this would lead to somewhere else. मैं सोचा था कौन से बंदे तब से मैं सोच रहा हूँ and this was not expected. Very nicely done. So, yeah. Any thoughts on that to our? Nothing. Could be a similarity. Could be something. I don't know. It's fun to be linked some like that. But fun anecdote है यार. मतलब इसको दिल से थोड़ी लगाता हूँ मैं. कि हाँ अरे मम्मी मैं गुंडोगान तरह दिखता हूँ ये देखो. Come on man. Okay, on that part. Moving forward, Zishan. I have a very quick quiz for you and our folks watching there, Zishan bhai. So आपने देखा है कि ट्रांसफर मार्केट किस तरीके से इन्फ्लेट हुआ है ओवर दीज विंडोज. हम लोग ने देखा है बेहतरीन बिग मनी साइनिंग्स. थैंक यू नेमार.
Thank you, Neymar. Woo. And thank you, Coutinho. Woo. And we have seen even Mikhailo Mudryk, we have seen Jadon Sancho, Enzo Fernandez, we have seen even Jack Grealish 100 million और अभी डिक्लेन राइस की बात चली 105 मिलियन. निशान भाई जो हमारे प्लेयर्स रहे हैं, जो हमारे लेजेंडरी प्लेयर्स रहे हैं, आप भी भाई लोग कमेंट करना और बताना कि उनके प्राइम में जो ट्रांसफर वैल्यू क्या हो सकती थी आज के मार्केट के हिसाब से. मतलब फॉर एग्जांपल जिशान भाई, लेट्स स्टार्ट विद द वेरी ऑब्वियस वन फॉर यू, माराडोना. In this market situation, आप भी भाई लोग do comment it. काफी स्पेकुलेटिव है. लाइक people need to understand कि ट्रांसफर वैल्यू किस पे डिपेंड करती है. ट्रांसफर वैल्यू इज नॉट अ वैल्यू ऑफ यू, राइट, इज अ वैल्यू ऑफ योर कॉन्ट्रैक्ट. कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू आपकी वैल्यू नहीं है वो. राइट. एंड इट इज हाईली लाइक बहुत टेक्निकल उसमें चीजें आती हैं. कॉन्ट्रैक्ट कितने लेंथ का है, आपके टर्म्स कैसे हैं, आपकी कितनी वेजेस पे आप हो, कितने साल आपके कॉन्ट्रैक्ट में बच रहे हैं, हाउ मेनी मिनट्स आर यू गेटिंग, हाउ इज योर फॉर्म, आप नेशनल में टीम में कैसा खेल रहे हो, कौन सी कंट्री में हो आप. तो ऑल ऑफ दीज फैक्टर्स कम इनटू प्ले. And let's keep an ideal scenario out of it, okay? I'm saying you have good years left in your contract. You are at a good 200k per week wage. You are even playing at the top form. You're not injured. You're injury free right now, and this is the situation. And you are required there as well. Cool. Someone like Bernardo Silva, as of this point, 2 years remaining contract, decent enough wage as well, or valued. Okay, Maradona. I'm nobody to put a value on Maradona. Shine, bhai. This is something that I don't like to do. But yeah, just for the fun of it. At least like easily like more than 150 million euros यार अभी इस पॉइंट टाइम पे. देखो वैल्यूज अगर हम उस एक्स्ट्रापोलेशन से जाए ना कि भाई पहले क्या थी. अच्छा जिडान अगर 70 में आए, काका 70 में आए, तो उस मार्केट को लेके अभी के मार्केट में केविन डी ब्रूयने डबल एटलीस्ट जाने चाहिए, या फिर चुआमनी है या फिर बेलिंगम है तो वो 200 में होना चाहिए. Football can't survive like that. Right. ऐसा नहीं हो सकता कि like every 5 years we see a player who could have gone for 40, he will go for 80. It's not like that. So it's not like कि अभी मैं like a player. Obviously we see our legends with those eyes कि भाई वो legends है, वो दुनिया के world best players हैं. Definitely Maradona, Pele, all of these guys come in that category. But it's like you can't put a price if they were to be transferred and एक टीम एक्चुअली में अप्रोच कर रही होती है उनको साइनिंग के लिए. कितना वैल्यू बिल्ड करते आप एक मैराडोना के लिए इन दिस करंट मार्केट. तो यू वुड गो ऑन प्रोबब्ली 150 से 200 मिलियन यूरोस वुड बी द प्राइस. लाइक एंड दैट इज द वैल्यू ऑफ किलियन एम्बापे राइट नाउ. इट इज Haaland probably if he wants to leave. Yeah, true. So it's not comparing the profile, it's not comparing the two players, it's comparing the contracts of the players and the value to the era. Value of Kylian right now, value of Maradona that time is the comparison of that value in those eras. And that is similar. Yeah. The Maradona of then could have been easily valued at 200 million euros right, as of this point. So that's the thing, yeah. And what about Pele? But same opinion about that. Can't really say like 50 million ऊपर नीचे होगा, but same like that. But no team is gonna bid 250 million euros for a Haaland. Never. 250 मिलियन यूरोस नहीं आप देखोगे किसी भी टीम को बिड करते फॉर वन सिंगल प्लेयर. दैट शुड नॉट हैपन. तभी यहाँ पे लाइक फुटबॉल इज डिफरेंट टू क्रिकेट एंड आईपीएल एंड आईएसएल एज वेल इन सम वेज, क्योंकि यहाँ पे द प्लेयर्स आर प्रोटेक्टेड, उनका फ्यूचर प्रोटेक्ट होता है, उनके कंफर्ट लेवल प्रोटेक्ट होते हैं. दे आर ट्रीटेड इन अ बेटर वे बिकॉज व्हेन दे जॉइन अ टीम तभी वो इतना सोचते हैं, इतना लंबा डिसीजन टाइम रखते हैं कि क्या मैं इस टीम में ज्वाइन करूँ कि ना करूँ. If they are there, they're not there for 1 year. They're there for next 5 years at least. If everything goes right, they're gonna be there at the club for longer. So they see all of these things and then make a move. They're not ready to jump ship unless they are going at Dortmund, या Ajax, या Benfica, या Sporting, stuff like that. और Chelsea की तो बात कर ली हम लोग. 8 साल का कॉन्ट्रैक्ट दे रही Chelsea. तो जो प्लेयर्स वहाँ पे आ रहे हैं, they're not here कि भाई मैं बस 2 साल में चल जाऊंगा. They're there for a project. Enzo को भाई 8.5 years का कॉन्ट्रैक्ट है and he knows कि अभी वो इस साल नहीं है चैंपियंस लीग में, but in the upcoming years he's gonna be there. तो no problems there. And what about the god of Indian football whom you touched few days back? Chhetri. हाथ धुले नहीं मैंने. गोल्डन हैंड. भाई साहब स्पाइडरमैन का वेब निकलने वाला है इसमें से अब. क्या करना है उनका वैल्यू? I can't that नहीं I can't do that. छेत्री की वैल्यू मैं नहीं बता पाऊंगा बाबा. छेत्री प्राइसलेस है. Priceless. तो जिशान भाई, I think let's probably wrap this up on a very patriotic note.
I think a few nights back we got to witness one of the biggest nights of basically Indian football. I Our would say. lives. Our lives. That's the Absolutely. word you should be looking for, Shoaib bhai. Our lives. I think our lives were just, I think, touched that day by the Almighty. I think that would be something I would keep in my head a lot. I cried that night for the first time. I think Zishan bhai cried during Argentina's match. Usse relation, I could imagine that feeling right there. I cried, and you were honored by Sir Igor's team match. You are the one who understands football. This guy knows. This guy knows. You celebrated with the Indian camp with them. You were with Sunil Chhetri. You high-fived Akash Bhai then and there. You had a talk with Mr. Sir Gavli even. Nishan bhai, इंडियन फुटबॉल जो कि कुछ समय पहले तक अगर कोई बात करता था कि वर्ल्ड कप खेलेगी, हम लोग एक टाइमलाइन देते थे 50 साल 60 साल. Can you see a glimmer of hope here? Absolutely, Shamik bhai. But that's the thing now. I don't want it to be rushed. I don't want people to just go in their emotions and like, अरे भाई अब तो ये ला दो टीम हरा देंगे, अब तो ये कर देगा, 26 वर्ल्ड कप आ रहा है. फिर when you aim for those goals, short-term goals, that'll lead you to failure. Make realistic goals. 2030 is much more realistic than 2026. If 2026 happens, by बहुत बढ़िया होगा. I'll be the first one to be there. Yeah. But that's setting wrong expectation for your country. We still see, देखो जीत है. It came in a penalty shootout. Could have gone anywhere. Same goes for the semi-final against Lebanon as well. We still see that development is needed. And when we were talking to the strength and conditioning coach, हमारे Radman sir, Croatian of Indian team. Yeah. तो what did he say कि भाई 50 दिन में हमने फिटनेस पे काम किया on a lot of players. Right. और सब एक साथ एक फिटनेस रेजाइम, एक डाइट. सो व्हाट हैपेंस इज नाउ कि हर एक क्लब में अलग होंगे स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच. तो अगर आप मोहन बगान पे हो, अगर आप बेंगलुरु पे हो, अगर आप मुंबई पे हो, सो दे विल हैव देयर पीपल, दे विल हैव देयर रेजाइम्स, दे विल हैव डिफरेंट ओपिनियन कि भाई छेत्री इतना कार्ब्स ले, इतना प्रोटीन ले, ऐसे खा, इतने पुशअप्स मार, जिम में 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा स्पेंड कर. एंड ऑन द अदर हैंड Jackson would be doing another thing. Listen, Colasso would be doing another thing. Gurpreet Singh would do another thing. Sandesh Jingan would do another thing. And all of these players would do different trainings, different diets, different strength and conditioning, different fitness regimes at the individual clubs. But when you were at the national camp for more than a month, you followed that training, you followed that conditioning, you followed that diet. Everyone is at the peak of their fitness right now. We saw 2 games जहाँ पे हमने 120 minutes plus football देखे. Sunil Chhetri playing both of those games for the whole 120 minutes. Nobody getting a cramp. And यही बात Radman sir ने भी कही कि भाई everybody was fit as fire. और they said, sir said कि भाई ये team एकदम specially उन्होंने कोट किया, this team was playing at their 70% effectiveness. ये पूरा भाई ड्रेनिंग रहा है टूर्नामेंट जो भी कहो आप. तो कल जो मैच हुआ कुवैत के अगेंस्ट, वी आर प्लेइंग एट 70% फिटनेस लेवल्स. Still we manage that. Tells you a big thing कि भाई कैंप कितना इंपॉर्टेंट है. क्वालिटी कैंप होना लोगों को अब दिखेगा कि भाई why this is important, why Igor's team match kept requesting this कि give me like longer days of camp, 15 days. मुझे at least दो with the players. Nothing can happen when the players will come in like 3-4 days ago before the tournament has to begin. So yeah, definitely India plays football now. That's the key thing there. India plays football. India is balling. And are the fans, Zishan bhai, I think एक जो मीम और बहुत ज़्यादा पॉपुलर आई थिंक इधर हुआ है कि सुनील छेत्री यूज्ड टू से आस्क रिक्वेस्ट अस बेग अस टू बी देयर. डू यू थिंक द फैंस आर रिस्पॉन्डिंग? They are. They needed something to connect, Shamik bhai. They needed something to connect, and we are proud that we were there as well, doing our part as much as we could do in whatever ways we could do to get the fans closer to the game. Right. And we are proud of that. But football doesn't need us. Nobody needs us. We are just a medium over there. We are surviving over there because we see an opportunity over here. We see a ways जिसमें हम अपने कंटेंट को ला सकते हैं, रेलेवेंस बना सकते हैं विद इंडियन फुटबॉल. बिकॉज दे नीड टू बी टॉक्ड अबाउट. हर एक बंदा भारत में जानता है क्रिकेट क्या है, IPL क्या है. बट नो, इट्स नॉट लाइक, मुझे नहीं लगा 30% से या 40% से ऊपर लोग इवन जानते होंगे फुटबॉल के बारे में. आप उनसे इंडिया की 11 नहीं बनवा सकते, बट आप उनसे क्रिकेट की 11, अब उनके सब्स्टिट्यूट, रिजर्व, फिर आप यंगस्टर्स कब अपकमिंग सब गिनवा सकते हो. इवन सबको पता होगा. बट फुटबॉल में द प्लेयर्स नीड टू बी सेलिब्रेटेड. व्हाट वी फेल्ट ओवर देयर, व्हाट वी सॉ ओवर देयर, दीज गाइज आर द सुपरस्टार्स. शामी भाई, हम सेलिब्रेट करते हैं ऐसे नचनियों को, ठीक है, डिसरिस्पेक्ट देयर, एन ऑफेंस, डिसग्रेस. हाँ,
बिकॉज वी डू दैट एंड जितने वो लोग गलत है जो उनको सपोर्ट करते हैं उतने हम भी गलत है क्योंकि कहीं ना कहीं हम भी उनको सपोर्ट करते हैं. इट्स नो प्रॉब्लम, ठीक है, दैट इज द डिफरेंट थिंग. अगर आप टिकटॉकर्स को आपको सपोर्ट करना है, अगर आपको उनको मिलियंस में करना है क्योंकि वो थोड़ा सा सुंदर दिखते हैं या वो फिल्टर बेहतर यूज करते हैं या तो दे आर रिच इनफ टू हैव एन आईफोन सो दैट दे कुड टेक गुड पिक्चर्स और हायर अ फोटोग्राफर टू गेट नाइस कोजी पिक्चर्स एंड बाल अपने पेंट करा सकते हैं लाल पीले हरे नीले, हरामखोर, तो रेनबो बन जाओ ना. Those guys are not your idols. Those guys are not the people who should be worshipped or should have 3 million or 4 million and who should be getting to spread the word of football. The people who should be doing that are the people who pay some part in it, in its growth. And those guys are on the pitch who work very hard day and night. This ego-steam match. The players, the fans are the most important thing of football. ये बात मैं हमेशा कहता हूँ. And they need to be they're having millions of followers and stuff like that. They need to be superstars. They need to be celebrated. They need those sponsors and they need that kind of life as well because they give everything. And ऐसे नहीं है कि कल हम देख रहे होंगे कि ये आकाश मिश्रा भाई हमारे उनके कल उनके इंस्टाग्राम पे 5 मिलियन फॉलोअर्स होंगे. ऐसा नहीं होगा. This not gonna happen. It's like a process. सीढ़ी है तो slowly it's very true. I think जिशान ने पता है वो पता what I'm realizing is all the fact कि ये जो 5 मिलियन 6 मिलियन ये सब धोखा है. What I observed is, I'll tell you, I think you will agree to it क्योंकि आपने सर पकड़ा था उस मोमेंट के बाद, then you started smiling. दांता सिंह का मिस होता है पेनल्टी, ठीक है, everybody is afraid and what they do start doing is दांता right at the moment बंदा रोते हुए वापस आ रहा था. बंदे they had his back and एक और चीज टू ऐड टू दिस, गोल हमने पहले कंसीड किया, वी वर देयर चैंटिंग इंडिया, गोल पड़ा, द चैंट डिडंट स्टॉप. It did not create an impact on the people in the stands because we knew गोल पड़ेगा. What did I tell you भाई, जो हम खेलें गोल आ रहा है. That's my reaction. और गोल आ रहा था because you felt that way. The team can do it. We lack on certain terms, we lack in certain areas, but I think we're in the right direction. We're gonna do better. कुवैत को हम हरा रहे हैं भाई, 2 मैच में डोमिनेट कर रहे हैं कुवैत को. गुड गेम बाय कुवैत बाय द वे, बट नहीं ठीक है, we are moving. This is India, bro. This is the new India which plays football, is balling. And Nishan, I think on that note, thank you for your time on this channel. Thank you for spending 1 hour of your sleep here. Thank you so much. And वीडियो अच्छा लगा भाई लोग, कमेंट करना, कुछ आपके सवाल हैं, कुछ आप जिससे अग्री किए डिसअग्री किए ज़रूर मेंशन करना. And let us know if you want to have these conversations in future as well. चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और as always, peace out. बीच में बंद हो गया था बे, देखा मैं सोचा कि उसका बंद हो गया. मैं सोचा अब जोक मार दूं यहीं पे, क्या लेके पकड़े उसको जो बंद पड़ा है उसमें क्या